Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So there is a flash news. So in Delhi, government has decided to restore original working hours or business hours of branches. So now instead of 10 to 2, the banking services will be available for extended hours. This is also being done in Bihar, and many more states may follow because the money will be flowing into customer account and they have to withdraw this money. Adequate police arrangements are also made in branches so that there is no uh, mishappenings in the branches, because government is expecting flood of people coming to branches to withdraw 500 rupees that may be made available in few days from now. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। दिल्ली ने फैसला किया है कि बैंकों का 30 तारीख से नॉर्मल बिजनेस आवर्स स्टार्ट हो जाएंगे। बिहार सरकार ने भी ये फैसला किया है कि वहाँ नॉर्मल वर्किंग आवर्स हो जाएंगे, तो इस तरह जो एक्सटेंडेड आवर्स हैं वो लागू होंगे बैंकिंग पे। अब क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी रश होने की उम्मीद है ब्रांचेस के अंदर, क्योंकि 500 रुपये पर जनधन योजना अकाउंट में आने की संभावना है 1 तारीख को। तो इसको देखते हुए पुलिस की भी उचित व्यवस्था ब्रांचों में की जा रही है ताकि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो ब्रांचेस में। ऑल द बेस्ट।